the math function, the C programming allow us to perform the mathematical operation through the function defined in the math.h file. So in the math.h file, so we are defining the mathematical function. So what are the functions are available? Like ceiling function, floor function, square root function, power function, then absolute function. So these are the function that is available in mathematics part. Okay, so ceiling function work is what? It round up the given number and it return the integer value. Round up करके the integer value show करेगा. Floor is also round down the number and it return the integer value which is less than or equal to the given number. Less than किंवा equal of a given number सहित. Square root function it return the square root of a given number. Power return the power of a given number. Absolute return the absolute value of a given number. So that is we call as a mathematical function. Okay, so now I show the program. देखो এটা হচ্ছে সিলিং 3.6 3.6 ହେଲେ 4.0 ଦେଖେଇବ ଆଉ ଦେଖ ଏଠି ସିଲିଂ ଯଦି ମୁଁ 3.3 ଦେଖଉଛି ସିଲିଂ ରେ 3 ପଏଣ୍ଟ ମାନେ 0.5 ଉପରକୁ ନେଲେ ବି 4.0 ଦେଖେଇବ ଆଉ 0.5 ତଳକୁ ନେଲେ ବି 4.0 ଦେଖେଇବ ମାନେ ସିଲିଂ ଫଙ୍କସନ ମାନେ 0.5 ସବୁବେଳେ ହାୟର କୁ ରାଉଣ୍ଡିଂ ନେଯିବ। ହଁ 0.5 ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ବି ହାୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ 0.5 ତଳକୁ ନେଲେ ବି ହାୟର ଭ୍ୟାଲୁ ଦେଖେଇବ ତାପରେ ହଉଛି କଣ ତାର ସେ ସିଲିଂ ଆଉ ଫ୍ଲୋର ରେ ଡିଫରେନ୍ସ କଣ ରହିଲା? ଦେଖ ଏଠି ଫ୍ଲୋର ରେ କଣ ହଉଛି ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଠି କମ ଦେଖଉଛି। ହଁ ଫ୍ଲୋର ରେ ବୁଝିଲି। 3.6 ନେଲେ ବି 3 ଦେଖେଇଲା 3.2 ନେଲେ ବି 3 ଦେଖେଇଲା ବୁଝିଲା ହଁ ଆଜ୍ଞା ତାପରେ ସାର୍। ଏଠି ଆମେ ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ 16 ର ସ୍କ୍ୱାର ରୁଟ ହେଲା 4.4 ରହିଲା ପୁରା ରାଉଣ୍ଡ ହେଇଗଲା 4। 7 ର ହେଲା 2.64 4 এটা ହେଲା ପାୱାର 2 to the power 4 ହେଲେ 16 এটা ହଉଛି 3 to the power 3 ହେଲା 27 ହେଲା ତାପରେ ଏଠି ଆବସୋଲ୍ୟୁଟ ହେଲା -12 ମାନେ ମାଇନସ ପାସ୍ କଲେ ଏଟା ପ୍ଲସ ରେ ଶେଷ କରିବ ବୁଝିଲା यस ଆଜ୍ଞା ଏଟା ହେଲା ସବୁ ମ୍ୟାଥମେଟିକାଲ ଫଙ୍କସନ ଆମେ ୟୁଜ କଲେ ତ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ତାପରେ ହଉଛି structure array allow to define the type of the variable that can hold the several data item of the same kind similarly structure is another user defined data type available in C that allow to combine the data item of the different kinds ମାନେ ଆମେ array ରେ କଣ ହଉଥିଲା ନା we have to store the data of same type ମାନେ same data type ର value ଆମେ array ରେ store କରୁଥିଲେ ଆମେ ଯଦି different type ର value store କରିବା ଗୋଟେ same variable ରେ ତାହେଲେ ଆମେ structure use କରିବା array ରେ in one memory location we have to store the multiple value but they having the same data type in structure you have to store the different type of value ମାନେ same memory ରେ ଆମେ different type ର value store କରିବା the structure are used to represent a record suppose you want to keep the track of your book in a library you might want to track the following attribute like title author subject book id ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଟାଇଟେଲ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଲଗା ରହିବ ଅଥର ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଲଗା ରହିବ ସବଜେକ୍ଟ ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଲଗା ରହିବ ବୁକ୍ ଆଇଡି ଗୋଟେ ନେମ୍ ଅଲଗା ରହିବ ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ ତ ଡିଫାଇନିଂ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର କେମିତି ଡିଫାଇନ୍ ହେବ ଟୁ ଡିଫାଇନ୍ ଏ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ୟୁ ମଷ୍ଟ ୟୁଜ୍ ଦ struct statement the struct statement define a new data type with more than one
member. The format of the struct statement is as follows: the struct variable, then members option. Okay, तो एटा सब मेंबर ऑप्शन हमें डिफाइन करियो को मेंबर कोठी अछि। देखो केमती डिफाइन करा हला गोटे स्ट्रक्ट डिफाइन हला स्ट्रक्ट नेम तापर एठी हमें डिफरेंट टाइप रो वेरिएबल हमें एठी स्टोर कले कैरेक्टर ए आईएनटी बी फ्लोट सी तापर हमें स्ट्रक्ट रो इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव करिया को हेले हमें स्ट्रक्ट रो वेरिएबल टा डिफाइन करियो स्ट्रक्ट my struct then my var is a struct variable so ये variable रो value केमती आनिबा ना my var dot b कले आ भीतर जा value अछि एठी मते शो कला एटा होची मोर struct variable तो struct books title character author सर बीटा कॉल हैला बोली सेटा गोटे इंटीजर स्टोर हेतिया बोली 99 देखला एंड माय वेरिएबल डॉट माने माय var डॉट जदि ए ही थांदा तो से जो कैरेक्टर टा इनपुट दिया था सेटा ही शो कर थांदा ना हाँ माने सिंगल वैल्यू सेटा रिट्राइव माने स्टोर करी थांदे हम गोटे सिंगल कैरेक्टर कैरेक्टर हेले कोन सिंगल टाइप रो बुझिला आज्ञा सर एटी गोटे स्ट्रक्ट डिफाइन हला स्ट्रक्ट बुक्स कैरेक्टर रहिला टाइटल 50 ऑथर रहिला 50 सब्जेक्ट पई लिखा हला 100 तापरे गोटे बुक आईडी डिफाइन करा हला आईएनटी टा बुक आईडी डिफाइन करा हला तापरे हमें देखो एक्सेस केमिति करिवा देखो एठी हमें कोन कले स्ट्रक्ट रो नाटा कोन अछि बुक्स अछि ए बुक्स रो हमें दीटा वेरिएबल बा स्ट्रक्ट वेरिएबल डिफाइन कले स्ट्रक्ट बुक्स बुक 1 स्ट्रक्ट बुक्स बुक 2 तो स्ट्रक्ट रे हमें वैल्यू स्टोर करिया पे केमती लिखा होची देखो strcpy बुक 1 डॉट टाइटल टाइटल ले हमें लिखिले सी प्रोग्रामिंग बुक 1 डॉट ऑथर ऑथर गोटे नेम पास करा हला बुक 1 डॉट सब्जेक्ट सब्जेक्ट दिया हला एठी सी प्रोग्रामिंग ट्यूटोरियल दिया हला बुझिला एटा स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर करिया पे हमें strcpy यूज करले जदि इंटीजर वैल्यू स्टोर करिवार अछि देखो डायरेक्टली पास करा हला बुक 1 हे गला कोन ना ऑब्जेक्ट डॉट बुक आईडी 6495407 इंटीजर वैल्यू स्टोर करिया गले डायरेक्टली स्टोर होबो एंड स्ट्रिंग वैल्यू स्टोर कराला हले strcpy यूज कराबो सेमते बुक 2 स्पेसिफिकेशन डिफाइन करा हला तो बुक 2 डॉट टाइटल टेलीकॉम बिलिंग बुक 2 डॉट ऑथर जारा अली strcpy बुक 2 डॉट सब्जेक्ट टेलीकॉम बिलिंग ट्यूटोरियल बुक 2 डॉट बुक आईडी गोटे पास करा हला तापर से इन्फॉर्मेशन को हमें शो करिवा बुक 1 डॉट टाइटल तो टाइटल हमले हमको टाइटल शो कला सी प्रोग्रामिंग ऑथर हेले नुहा अली शो कला सब्जेक्ट हेले सी प्रोग्रामिंग पुनी बुक आईडी एटी शो कला देखो इंटीजर वैल्यू स्टोर करा परसेंटाइल डी यूज कर जाउची सेमती बुक 2 डॉट टाइटल बुक 2 डॉट ऑथर बुक 2 डॉट सब्जेक्ट एंड बुक 2 डॉट बुक आईडी ओके तो ए टाइप रा हमें वैल्यू पास कर ले बुझिला यस सर हमें एटा प्रोग्राम टा रन करी हम देखौची
This one is a struct application. So as we discuss about struct, the struct means like in your array, in array you have to store the value of same data type in a same memory location. If you want to store the different type of value in a same memory location, we're using a struct. So for defining a struct, first you have to define a struct keyword, struct, then struct name. Then you have to pass a value, character, title. See that in a same memory location, here we have passed a different type of value. Then now we're defining struct books. Books is the struct name, book 1. Struct books, book 2. Then for storing the value, string value. Okay, so जो string বা character value ତମେ store କରିଛ, character value store କରିବା ପାଇଁ ଏଠି strcpy use କରାଗଲା. strcpy book1 dot title C programming, book1 dot author Nuha Ali, book1 dot subject C programming tutorial, book1 dot book id this value. तो ये सब value मोर एठी store ହେଲା. तापर सेमती book 2 dot title telecom billing, book 2 dot author is Zara Ali, book 2 dot subject is again telecom billing tutorial. Okay, so we are storing all the value in the book 2. Now for printing that document, we are using here book 1 dot title, book 1 dot author name, book 1 dot subject, book 1 dot book id. Okay, तो ये सब book 1 माने ये जो value गुड़ा को जो store कले ये दिखेगा. सेमती book 2 ପାଇଁ book 2 dot title, book 2 dot author, book 2 dot subject, book 2 dot book id माने value show करिए. Book 1 dot title C programming, book 1 dot author Nuha Ali, book 1 dot subject C programming language, book 1 dot book id is book 2 dot title telecom billing, book 2 dot author Zara Ali, book 2 dot subject telecom billing tutorial, book 2 dot book id then 6495700. Okay, so these are the information we are passing. बुझेला struct ଟା? ଆଜ୍ଞା sir. Yes, sir. Yes, sir. Then by defining a struct courses, then character website 50, character subject is 50, then int price. So three variable here we define. Then struct courses, we are defining a struct variable C, then C dot website means character data अच्छी तेना strcpy use करागा. C dot subject, then C dot price equals to 0. Okay, for struct 1. It is a website google.in, author name is C programming language, book price is 0. So it is the way of accessing the value. sir ଏଠି subject ଟା କୋଉଠି pass ହେଲା କହିଲେ? Subject ID variable टा define है नहीं subject ID. ID pass करा ये ID रे define. तो सर आसुनी हाँ कॉल ही नहीं आउटपुट रे ये देखिए ऑथर ना हाँ ऑथर ପାଇଁ ସେଇଠି ଇଏ ହେଲା ବୁଝିଲେ sir? हाँ
हाँ सर बुझिली बुझिली एबे बुझिली of struct the struct int id character name तो एठी struct ପାଇଁ struct variable हे गला u1 दिशा बुझी परजु तो दिशा Yes, sir. बुझी होची struct टा Sir, late ରେ join करची तो कि जानि पन struct टा होची माने आमे एंती array define करूतले array रे कोन होतला आमे सेम टाइप रो वैल्यू रखुतले बुझी होची yes, sir. एटा struct टा होची कोन आमे डिफरेंट टाइप ऑफ वैल्यू आमे यूज करिवा माने देखो सेम मेमोरी लोकेशन रे आमे डिफरेंट वैल्यू एठी देले इंटीजर वैल्यू स्टोर करि पाउ छे कैरेक्टर वैल्यू भी स्टोर करि पाउ छे बुझी होची तो array is a collection of data element which is store the same type of value okay struct is a it is a variable which store the more than one value but having different data type it is different data type ରହିला जेंते int id ରହିला character name ରହିला बुझिला बुझी Yes, sir. परछु तापर struct टा को एक्सेस करबा को हेले struct रो वेरिएबल एठी डिफाइन करिया पड़िबो बा ऑब्जेक्ट एठी struct रो वेरिएबल हला e1 बुझिला ओके Yes. e1 then e1 is a object e1 dot id equals to 101 ओके हमें इंटीजर वैल्यू टा एठी पास करले तापर हमें स्ट्रिंग वैल्यू पास करबा को हेले हमें एठी यूज करबा कोन ना strcpy मेथड टा यूज करा जिवो तो strcpy e1 dot name this value ओके तापर ताको एक्सेस करिया पई e1 dot id हेले मते id शो कला 101 e1 dot name कले मते नेम टा एठी शो कला बुझिला Yes, sir. तो ये बारे हमें डिफरेंट प्रोग्राम सब करथिल तो एठी हमें देखला 101 आ गोटे हला जॉयसवाल गोटे देखेला वैल्यू टा बुझिला yes sir okay it is a struct operation sir. Yes, so sir. in the next class maybe it is a last class next class टा हबो और पर रहिला union then input output हो okay okay sir चलो बाय Good night, sir. good night.